Good morning, kids. Today's class, we are going to discuss the JEE Mains 2024 PYQ. Chapter name is Electrostatics and Gauss Law. So now we'll discuss the April shift. Once again, what is the methodology for JEE Mains? Like especially the electrostatics and Gauss Law. What are the basic requirements of this chapter? So you must be very good in the point charges, electric dipole, and Gauss law. Not high level problem, just the basic things. I think this is the region where they're asking plenty of problems. Already in the January shift also, I gave the same instruction, the same thing I'm going to repeat. Then along with this, remember all electric field and potential due to all the charge bodies. Remaining this one, these are the threshold areas. So try to avoid all that lengthy advanced problems. The basic formulas is what you should remember. So read this Alto. It's very lengthy chapter. Read it. So problems will be focused on these areas. Don't go for revising lengthy problems. And this is very important. So you must really remember the electric field and potential due to various charge bodies. Okay, fine. So we'll discuss the problems now. So we have the two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. I'll put in Hindi also. यहाँ पे दो चार्ज स्पीयर्स है, एक दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल लेंथ से या कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर चुके हम, and दोनों strings they'll make angle theta with each other. The angle between the strings is theta. जब वाटर में सस्पेंड करते हैं इसका एंगल सेम होता है, मीन्स पहले ए में थे, फिर इसको हम वाटर में डुबा देते हैं, will immerse in water, then उसका एंगल जो है वो remain same. With this is asking find the dielectric constant of water. यहाँ पे हमें density of metal of spheres दिया है और density of water भी दे चुके हैं 1 gram per cc. We should use this basic information. Okay, पहले let me take help of the जो sphere है. So already I think in January shift में same problem हम discuss कर चुके हैं. वही problem एक density of medium था वहां पे, यहाँ पे density of water, dielectric constant of water पूछ रहे हैं. Then what are the forces? इसका कौन सा forces है? Length L, charge plus tension T, इसका एंगल थीटा बाई 2. यहाँ पे थीटा बाई 2 लगा देंगे. ये पहले चार्जेस और इसका सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज एक्स. पिंक कलर से व्हाट आर द फोर्सेस यहाँ पे, ये जो इसका सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे भी टेंशन T एंड mg. तो इसका क्या हुआ नाउ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे हम tan थीटा बाई 2, इसका एक काम करेंगे, ये फाई रख देंगे, ये कुछ काम करने हैं. और थीटा क्या है? थीटा 2 पाई, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स. नो कंपोनेंट ऑफ टेंशन, यहाँ पे T cos फाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin फाई. ये जो T sin फाई इट विल बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, T cos फाई विल बैलेंस mg. At equilibrium we'll write down the equation.
टी कॉस तो इसका tan फाई हुआ बाई एम जी। इसको हम इसी को हम पानी में डुबो देंगे। सो दिल बी इमर्स्ड इन वाटर, जैसे कंडीशन यहाँ पे दे चुके हैं हम। So like now they are immersed in water। ये ब्लू कलर ये सब पानी है। अब इसको हम सब यहाँ पे पानी में कंप्लीट सेटअप नाउ पानी में इसका रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट इट बी रो एल। डेंसिटी ऑफ स्पीयर्स दे चुके हैं, सो उसको हम सिग्मा ले लेंगे। चार्ज भी है और उसका डेंसिटी भी है। दिस इज द सिग्मा। इसका फोर्सेस बायन फोर्स यहाँ पे भी बायन फोर्स ले लो। टेंशन थोड़ा चेंज हो जाता है, लेट इट बी टी डैश। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इट विल चेंज। क्यों चेंज हो? बिकॉज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज चेंजिंग। अर्लियर यहाँ पे तो एयर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। अब मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस चेंज हो चुका है, सो इसलिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो विल चेंज, विल कॉल दैट एज एफ ई डैश। देन दिस विल बी टी डैश cos phi zero। सो एंगल चेंज नहीं हुआ है। सो ये दो इक्वेशंस हम इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद इसका वैल्यू हो नो एफ ई बाय एम जी। इसका क्यू स्क्वायर चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू व्हाट इज एम? एम विल बी सिग्मा वी जी बाय एन फोर्स डेंसिटी ऑफ वाटर रो एल वी जी और सिग्मा वी जी। सिग्मा बाय रो एल माइनस सिग्मा। इसका सब जो डेंसिटी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम जी माइनस एफ पी। थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन एम जी माइनस एफ बी होगा। सो थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। तो दिस विल बिकम एम जी माइनस एफ बी सिग्मा और ये वो रो एल। नहीं, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में गलत हुआ था। सो दिस विल बिकम सिग्मा माइनस रो एल। तो डेंसिटी ऑफ 1.5, डेंसिटी कितना 1.5 है। यहाँ पे डेंसिटी 1.5 और वाटर का 1 है। तो 1.5 बाय 0.5। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना है? 3। दिस विल बी आवर आंसर। हाँ, बेटर बेटर
दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक ए प्रॉब्लम है, और इसका फॉर्मूला अगर याद रहे तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करके ये आंसर लेके आ सकते हो ना। इतना सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। हम्म, अब जाके चेक कर लो आपके टीचर के नोट्स में, दिस प्रॉब्लम विल बी देयर। आपके टीचर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके रहते हैं। सो रिवाइज करके तुम जब एग्जाम जा रहे हो, these things you have to remember. ये जो फॉर्मूला, ओके, relative permittivity depends on density of the sphere by density of the surrounding medium. डायरेक्टली एग्जाम में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट फिनिश हो। ऐसे आप थोड़ा जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। An electric field E equal to x I cap exists in a space. A cube of side meter 2 meters placed in space as per given figure. The electric flux through the cube. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेरिएबल, नेट फील्ड थ्रू द क्यूब पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम ये दोनों फ्लक्स है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नंबर दे देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 x I कैप है। सो फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 2 6 5। Flux due to the surface 1265. Next, due to the surface 1485 2376 will be zero. Why it is zero? Because the E bar will be tangential to the surface for all this one. यहाँ पे आपको E bar का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे ई बार का डायरेक्शन इस तरफ है, और एन कैप का डायरेक्शन इस तरफ है, ये दोनों सरफेस को। बाकी बचे तो सभी सरफेस को ई बार इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, सो इसलिए फ्लक्स विल बी जीरो फॉर दीज सरफेसेस। द रीजन इसका आप यहाँ एग्जांपल ले लेंगे। ये जो सरफेस है ना, लाइक एन कैप, यहाँ पे ई बार इज पैरेलल टू एन कैप, सो देयरफॉर फ्लक्स इस सरफेस में जीरो होगा। ओके फाइन। फ्लक्स इस सरफेस में भी जीरो होगा, फ्लक्स इस सरफेस में भी जीरो होगा, फ्लक्स इस सरफेस में भी जीरो होगा। फाइन। ओके, नो द फ्लक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 इक्वल टू ई इंटू इसका 2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर है। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्रीज। ई का वैल्यू कितना है? 2 इंटू एक्स। एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2 स्क्वायर cos 0 1। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4 मीटर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर 16 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का वैल्यू एन कैप इस तरफ है। 5 6 7 8 cos 180। ई का वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर है।
और 2 स्क्वायर -1। तो कितना हुआ? -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट फ्लक्स तो ये चारों का तो 0 है। तो बाकी बचे सो ये दोनों हैं, 1 2 3 4 -5 6 7 8। इसका ऐड कर लेंगे। नेट फ्लक्स मीन्स एसओबी है। सो इसका तो कितना, 32। ये हुआ -16 और 0 0 0 0। सो टोटल विल बी 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो आंसर है। फाइन। दिस इज वन वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, प्लीज डू रिमेम्बर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल टू ई बार डॉट एस बार। अगर ई हर जगह कांस्टेंट है सरफेस के ऊपर, देन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। अगर ई वेरिएबल रहे तो देन द फॉर्मूला शुड बी, फ्लक्स शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। अगर ई वेरिएबल रहे तो, अगर ई कांस्टेंट रहे तो ई डॉट एस। देन we'll take the next problem. Very simple and very important. यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। देन इसमें थोड़ा 3 चार्जेस यहाँ पे, एक +5q चार्ज, और ये जो q चार्ज है, दिस वन विल बी -2q चार्ज, दिस विल बी +3q चार्ज। ये वाला हुआ -4q चार्ज। एग्री दिस? Then what is the net flux? The electric flux due to configuration through the surface. सर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? लगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन। पहले एक काम करेंगे, नेट चार्ज कितना है? 5q, 6q, 4q, 4q हो। देन नेट चार्ज एनक्लोज्ड, यहाँ पे करेंगे नेट चार्ज एनक्लोज्ड। नेट चार्ज एनक्लोज विल बी 5q + 2q। नेट फ्लक्स जो है वो ड्यू टू एनक्लोज चार्ज ओनली। एनक्लोज चार्ज कितना हुआ? 4q। सो दिस विल बिकम 4q by epsilon naught. This is a net flux. This one, sir, ये 3q and 4q क्यों नहीं दे रहे? तो 3q का जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, it will pass like this. Then -4q का, -4q का इस तरह ले सकते हैं हम। सो जितना भी लाइन्स 3q का एंटर हो रहा है उतना बाहर जा रहा है।
Same thing, 3Q, the lines of force, they're entering and leaving. -4Q का जितना भी जो एंटर हो रहा है उतना उतना बाहर जा रहा है. और so like the flux leaving and entering what happen will be equal. I don't like this. This is one basic idea. सिंपल लाइक एक्चुअली लाइंस ऑफ फोर्स को भी ड्रॉ करना है उतना टाइम नहीं है मेरे पास. सो जस्ट लाइक ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है जो -4Q का, दिस इज एंटरिंग एंड लिविंग. सो नेट फ्लक्स इज जीरो. इट इज एंटरिंग एंड लिविंग. 3Q का एंटर हो रहा है और लीव हो रहा है. सो देयरफॉर द नेट फ्लक्स ड्यू टू 3Q एंड -4Q विल बी जीरो. एंड व्हाट ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स विल बी देयर ओनली ड्यू टू द 5Q. ड्यू टू 5Q विल बी लाइक दिस. नेट नेट क्या हो रहा है, लाइक इट इज very very simple. Two -2Q का सब lines of force they are entering. For +Q charge they are leaving. And +5Q का भी leave हो रहा है. So therefore those lines of force which are entering, for them what will happen, will take flux negative. Those lines of force which are leaving, the lines of force, they are taken as positive. Like this, the basic idea of the flux is coming. So if you take the 3Q का charge, इसका lines of force entering and leaving. -4Q का यहाँ पे enter होके यहाँ पे leave हो रहा है. So therefore, like this, what we say that the net flux contributed by -4Q and 3Q will be zero. Flux due to all charges will be non-zero, but net flux will be only due to charges enclosed. Simple. अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है, बाकी सब छोड़ दो. जो भी चार्जेस अंदर है वही नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करते हैं. दिस आइडिया. Now we take the next question. At the center of offering of radius r and linear charge density, the potential is. Potential of the ring के बारे में पूछ रहे हैं. अगर फॉर्मूला याद रहे तो फाइन गुड. एट द सेंटर ऑफ हाफ ऑफ द रिंग, आधा रिंग ड्रॉ करेंगे. This is the ring. This is the charge. Okay, agreed. यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं. So we'll assume some small element theta. इसका एलिमेंट का लेंथ कितना है, dl. r angle subtended d theta. Potential at this particular point, dvo is equal to k dq by r. K by r. dq equal to lambda into dl. K lambda r. dl is how much? r d theta. Angle subtended by the arc, so this will become k lambda d theta. So this will be 0 to pi. This will become k lambda pi. Now so because value substitute करेंगे. Pi v. So k का value कितना है? K value will be 1/4 pi epsilon naught. X pi, potential is x pi पूछ रहे हैं.
के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो के का वैल्यू 1/4π0. सो 9 into 10 to power of 9. लैम्डा का वैल्यू 4 into 10 to power of -9 into pi, 36 pi volt. सो वैल्यू ऑफ एक्स कितना 36. अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो स्टिल मोर गुड. और द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फॉर्मूला तो के क्यू बाय आर है. व्हाट इज क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू पाई आर. इसका सॉल्व करें तो कितना हुआ के लैम्डा पाई. अगर आपको फॉर्मूला ए याद रहे तो सीधा इस टेक हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. अगर नहीं याद रहे तो टेक हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन मेथड. डन. बेटर रिवाइज ऑल द फॉर्मूलास. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चार्ज तो भी उसका फॉर्मूला से याद कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the net electric field at point P along y-axis is 0, then the ratio of Q2 by Q3 is. यहाँ पे net electric field is 0. Along y-axis is 0 पूछ रहे हैं. So along y-axis 0 means ये थोड़ा ये ले लेंगे. So this is the E2, ये हुआ E3. इसका एंगल θ2 θ3. नेट फील्ड इट शुड बी 0. 0 के लिए दिस एंगल कितना हुआ ये θ2. दूसरा कलर ले लेता हूँ. ये वाला हुआ θ2. नो रिजॉल्व करेंगे. सो नेट फील्ड एट पॉइंट पी शुड बी 0. इसके लिए तो E2 cos θ2 माइनस E3 cos θ3. E2 का वैल्यू कितना है के Q2 R2. डिस्टेंस हुआ ये R3. के Q2 R3 स्क्वायर cos θ2. cos θ2 वैल्यू कितना है 4/R2 माइनस E3 का वैल्यू कितना है के Q3 R³ स्क्वायर cos θ3 will be 4/R3. So इसका वैल्यू के Q2 4/R2 क्यूब 4 Q3 R3 क्यूब. R2 R3 इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो द नेट फील्ड ये तो 0 हुआ. रेशियो पूछ रहे हैं Q2 बाय Q3. ये तो रेशियो हुआ R2 बाय R3 बाय होल क्यूब. R2 का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. इसका वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. जस्ट सॉल्व इट. कैलकुलेट करेंगे आप लोग. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया. ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस 0. अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस कितना है EPX. इसको रिजॉल्व कर दो. रिजॉल्व दिस E2 sin थीटा E3 sin थीटा ऐड कर लेंगे. दिस विल बी E2 sin θ2 प्लस E3 sin θ3. सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू. Then we'll get the net field at point P along X. This will be non-zero.
वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट बेसिक वेक्टर्स, अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर्स याद रहे तो दैट्स इनफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे। हाँ, विल गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है, 2i cap 6j cap 8k cap by √6, दिस है ई बार वेक्टर passes through a surface area 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, एंड उस एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर 2i cap plus j cap plus k cap, the electric flux for the surface. The vector form of the electric flux. What is the vector form of electric flux is? Flux is equal to E bar dot S bar. Then S bar का वैल्यू कितना है? 4, 2i cap j cap k cap √6 से आपको this is a physics formula. Okay, fine. So this is a physics formula. बाद में ये तो वेक्टर अलजेब्रा है ना, डॉट प्रोडक्ट। इसके लिए कॉन्सेप्ट कुछ भी जरूरत नहीं, आपको बेसिक वेक्टर अलजेब्रा पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं। तो समहाउ आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लक्स, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर एरिया वेक्टर दिए तो देन व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? ई बार डॉट एस बार। बाकी यहाँ तो दिस अ वेक्टर अलजेब्रा नो, तो देन विल टेक इट √6 4, यहाँ पे 2/3 हुआ, आई डॉट आई, ये दोनों फर्स्ट आई डॉट आई 1, so this will become 4, I dot j 0, I dot k 0, j dot I 0, j dot j, this will be 6, k dot I 0, k dot j 0, k dot k, this will be 8. 3 1 ja 12, 12 volt electric flux. So what they're asking is like a electric flux का value कितना है? Volt per meter into meter square unit, इसका और दूसरा ये जो यूनिट है वोल्ट मीटर, volt per meter is electric field, voltmeter is electric flux. Simple, somehow remember this formula. Then agla question, two charged conducting spheres of radii AB are connected to each other by conducting the ratio of charge of two spheres respectively. Age. The ratio of charges of two spheres respectively. The ratio of charges, यहाँ पे जो भी चार्जेस है से Q1 Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडिया ए एंड इसका रेडिया हुआ बी, दोनों कंडक्टर मीन्स आई राइट आयरन, दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, देन जब ये connected by wire, then their potentials must be equal. What is the potential of sphere A, sphere B? What is the potential of sphere A should be equal to B. The reason, when two conductors are connected by a conducting wire, the potentials must be equal. The reason for that, conductor is an equipotential. One statement is there from electrostatics. Conductor is an equipotential surface. Sure. So we potential of conducting sphere का वैल्यू कितना है? k q1 by a, k q2 by b.
कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Two identical conductor P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 Newton. So यहाँ पे हमें दो स्पीयर्स हैं। They repel each other with a force कितना, F का वैल्यू कितना, 16 न्यूटन। A third identical uncharged condenser pair are brought in contact with two spheres. The new force of repulsion between P and S. So this is the sphere A to sphere PO. This is a Q. Identical इसका रेडियस सेम रहेगा। Okay, now this will be, इसका चार्ज कितना है, Q and Q. Separation, let it be X. Now पहले P and uncharged sphere will be brought in contact. So an uncharged one, now इसका चार्जेस कितना हुआ, ये तो चार्ज Q था, they brought in contact, जब they come in contact, what will be the final charge, will be Q by 2, Q by 2. ये तो sphere P हुआ, PS. Okay, this will be R. जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे P एंड अनचार्ज, और सर लेके ए अनचार्ज क्या है, सर लेके अनचार्ज ए वाला तो अनचार्ज है, कहाँ पे है? ए बाजू में, यहाँ पे रख दो बस। फाइन, ए तो अनचार्ज है, तो क्या करेंगे नाउ, P एंड R को कांटेक्ट में रख देंगे, सिंस रेडियस इज सेम, so the charge what pen will get divided because they are having same radius. Then अगली बार क्या करेंगे, now this Q by 2 I'll make in contact with the S. थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आए तो इट विल बी वेरी इजी। ए वाला हुआ S, इसका चार्ज कितना है, Q by 2। नो, ये दोनों को हम बाजू में लेके कांटेक्ट में रख देंगे, देन जब ये दोनों को हम कांटेक्ट में रखेंगे, व्हाट बी द फाइनल चार्जेस, will be the final charges. So इसका फाइनल चार्ज हुआ Q by QS और A हुआ QR। फाइनल चार्जेस एक कैलकुलेट करेंगे हम, Q प्लस Q by 2 इक्वल टू QS प्लस QR, दोनों सेम है, 3Q by 2 and QS by A should be equal to QR by A. So therefore QS equal to QR. So 2QS charge, so QS equal to now कितना, 3Q by 4, QR भी 3Q by 4। now फाइनल चार्ज इसका कितना हुआ,
और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए इसका चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ये पी है। इसका वैल्यू कितना है, नो 3Q/4। इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है, एफ डैश एंड एफ डैश। सो एफ डैश का वैल्यू हुआ KQ 3Q/4 x² F equal to KQ² by x², 3F/4। F का वैल्यू कितना है, 12 न्यूटन। The new force of repulsion between P and S। इसका तो Q/2 ना, ए वाला यहाँ पे रखते हैं, नॉट ए वाला। सो दिस विल बी Q/2, 8, ए हुआ 8 to 6 न्यूटन। Very good problem, huh? Conducting spheres, conservation of charge idea. All questions easier. Only thing is you should know the basic concept. Huh? Next check 3 infinitely long charged tin sheets। यहाँ पे हमें 3 conducting sheets या 3 long charged tin sheets are placed। यहाँ पे एक शीट है, बाद में ए वाला, बाद में ए वाला। ओके फाइन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P में। Okay, this is the electric field. This sheet will produce field in this direction. A be negative है, so the electric will be directed towards it. This is a positive. This will produce electric field in this direction, E3 and E3. So resultant field at point P will be given by the formula E1 minus I cap, E2 I cap, E3 I cap. So E1 का वैल्यू कितना है, σ/2ε0। E2 का वैल्यू कितना है, 2σ/2ε0। E3 का वैल्यू कितना है, σ/2ε0। कुल मिला के दिस विल बी σ/ε0 विल टेक कॉमन, आई कैप भी कॉमन ले लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड σ/2ε0, σ/2 इसका तो वैल्यू 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, सो 2σ/ε0। सिंपल जस्ट वेक्टर सम। सो लाइक जो तीन चार्ज शीट्स है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, दिस विल बी यूजुअली नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग रहे तो σ/ε0 ले सकते हैं, दिस आर नॉन कंडक्टिंग शीट्स। अगर कंडक्टिंग शीट है तो देन वी डोंट मेंशन चार्ज लाइक दिस, विल मेंशन चार्ज ऑन आइदर साइड। तो इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई थिन और नॉन कंडक्टिंग शीट्स मींस, अगर ये कंडक्टिंग रहे तो विल मेंशन चार्ज ऑन बोथ साइड्स। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो विल जस्ट नियर बाय शीट विल मेंशन दैट द चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन वन सरफेस। Simple ideas. This was the basic convention what we follow in the books। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार रिपीट करता हूँ, अगर ए जो कंडक्टिंग रहे तो विल मेंशन चार्ज ऑन बोथ साइड्स। अगर नॉन कंडक्टिंग रहे तो जस्ट यहाँ पे या यहाँ पे जस्ट विल राइट इट द सिग्मा ओनली। दोनों फेस के ऊपर हम चार्ज इंडिकेट करें तो वो कंडक्टिंग है।
जस्ट यहाँ पे रखे, बीच में अगर चार्ज लिखे तो, या बाजू में चार्ज डेंसिटी दिए तो इट बी नॉन कंडक्टिंग. दिस अ कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This is the electric field due to the conducting sigma is the charge density. Means ये जो conducting sphere है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है. Okay, this is the iron conducting sphere. Electric field at any point on the surface. What is the electric field on the surface of a sphere? KQ by R square. Okay, agreed. Charge density. Sigma is a charge density. Sigma का value कितना है? Q by 4 pi R square. Okay, this is the electric field vector. Huh? Simple. Sir, only this is applicable for conducting? No, even for conducting sheet this is applicable. इसका चार्ज यहाँ पे है. What is the electric field due to conducting sheet? It is also equal to sigma by epsilon naught. अगर कौन सा तो charged surface which is of arbitrary shape, look at shape, very arbitrary. अगर यहाँ पे चार्ज रहे तो what is the electric field near by the surface? Electric field nearby surface again sigma by epsilon of any shape also, provided it should be conductor. दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. The electric field at point P due to electric dipole is E. यहाँ पे कितना है? The electric field vector is E. Then the electric field at point R on equatorial line will be equatorial line at point R. Point R तो यहाँ पे है 2R. यहाँ पे what is the value of the electric field is asking. So यहाँ पे electric field vector, what is the direction of electric field vector? इस तरफ रहेगा. Then on the bisector on equatorial line the value कितना है? K P by 2R whole cube. इसका वैल्यू कितना है? E का वैल्यू 2KP by R cube. Agree this. यहाँ पे हम E dash को we have to replace KP R cube. KP R cube will become E by 2. So 1 by 2 cube KP R cube. So KP R cube will become E by 2. So 1 by 2 cube into E by 2. This will become E by 2 to power of 4. This will become E by 16. Just on the bisector, on the equatorial line, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. Then on the bisector, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए. बस हो गया, फिनिश. इलेक्ट्रिक डायपोल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. A vehicle carrying inflammable fluid, usually a metallic chains touching the ground to protect tires from catching dirt from the ground. To alert other vehicles, it's a custom to conduct excess charge due to air friction to ground and prevent sparking. I think this is a conceptual thing based on the option 4. So it's based on this option 4. To conduct excess charge due to air friction to ground and prevent sparking. A charge Q is the center of
one of the surfaces, the flux linked with the cube. We'll draw the cube. एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ कर लेंगे. There's a cube. The charge के पे center of one of the surface of the cube. यहाँ पे रख देंगे. The flux linked with the cube. The flux linked with the cube. So we'll assume two surfaces. How much of flux? Half of the lines of force will pass through the ये जो ब्राउन कलर लाइंस है, these are the lines of force. बाकी बचे सो हाफ ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स वो नीचे वाले क्यूब से पास हो जाएंगे. नीचे वाला ब्लू कलर, ब्लू वाला नीचे वाला क्यूब है, ऊपर का क्यूब है येलो है. देन सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड लाइक नेट फ्लक्स. ऐसा लगे नीचे वाले और से नीचे वाले या ऊपर वाले तो कितना फ्लक्स पास हो रहे हैं. सो व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स मीन समथिंग लाइंस ऑफ फोर्स. यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे देयर आर 100 लाइंस ऑफ फोर्स इज जनरेटेड बाय दिस चार्ज. सर यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा है. दिस इज द चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू. इसका चार्ज ग्रीन कलर कर देंगे. ओके फाइन. ये जो 100 लाइंस ऑफ फोर्स जेमिट हो रहा है ऊपर ऊपर like a 50 lines will pass through this cube, remaining बाकी बचे सब 50 lines नीचे वाले क्यूब में. तो फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना लाइंस पास होते हैं नो, कितने लाइंस पास होते हैं. तो डेफिनेटली वो जो 100 लाइंस, हाफ ऑफ द लाइंस will pass through it. Remaining of what happen will pass through this upper cube. So therefore the flux linking each cube will be how much? Half of the total flux. So q by 2 epsilon naught. A little bit some question थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है. There is a infinite plane sheet of charge uniform charge density sigma s placed on xy plane. थोड़ा xy plane ड्रॉ कर लेंगे. This is a y-axis, x-axis, and this is the z-axis. In xy plane, there is a plane sheet of charge uniform charge density. यहाँ पे assume करें थोड़ा. Let me draw the diagram. It'll be easy for you. ये हुआ प्लेन शीट है. इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा एस. An infinite long line charge having uniform linear charge density lambda e placed at z equal to form plane parallel to y-axis. Now we'll assume the this will be infinity
infinity, z equal to 4 meter. The magnitude of then at point 0,02. यहाँ पे मिड पॉइंट पे is asking the ratio of magnitudes of electric field. इसका लाइन चार्ज का लैम्डा ई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, ड्यू टू शीट कितना है ई एस, रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट, रेशियो पूछ रहे, सो ई एस बाय ई, the ratio of magnitude of electric field value due to sheet to that of line charge. Due to sheet having uniform charge density sigma infinite, so इसका value was sigma s by 2 epsilon naught. Due to line charge का value was 2 pi epsilon naught r, so sigma s r by lambda. The ratio of magnitudes, so sigma x equal to 2 lambda e सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा इसका वैल्यू कितना 2 लैम्डा ई, सो 2 लैम्डा ई r by lambda e, so this will be 2r by 2r pi. The ratio of magnitudes, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू will be 2 meter, so 2 into 2 pi, 4 pi. पाई इसका रीराइट लिखेंगे जैसे पाई रूट 16 बाई 1, इनका वैल्यू कितना हुआ 16. जस्ट फॉर्मूलास आपको थोड़ा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि रखना है कि electric field due to line charge lambda by 2 pi f naught r, electric field due to non conducting charge sheet sigma by 2 epsilon naught. अगर ये दो फॉर्मूला याद रहे तो देन क्वेश्चन पढ़ के ये डायग्राम अगर आप खींचे तो देन इट्स लाइक व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द line charge should be radially outward, due to the sheet should be perpendicular to it, the sheet is in xy plane, so therefore the electric field due to sheet will be along z axis. See, one very simple, there's nothing there me to explain all these things, are just small basic ideas, basic fundamentals. So अगला question, so पढ़ लेंगे, an infinitely long positive charge state that has linear charge density lambda, electron revolves. पहले हम लाइन चार्ज को ड्रॉ कर लेंगे, infinitely long line charge. There's an infinitely long line charge. यहाँ पे this is the electron. Okay, fine. इसको जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, दिस इज द स्पीड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे रेडियस यहाँ पे लगा देता हूँ. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, दिस विल बी एफ, दिस इज लैम्डा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, and electric field due to long line charge will be perpendicular to it. Since the electron, it will experience force opposite to electric field. Fine. Now यहाँ पे centripetal force कौन provide कर रहा है centripetal force? This electrostatic attractive force. We'll write down the equation. F equal to mv square by r. F equal to minus E by E mv square r. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, लैम्डा 2 पाई एफ नॉट आर एम वी स्क्वायर आर. तो इसका स्पीड कितना हुआ, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी v इज इक्वल टू
under root of E lambda 2 pi F naught n. Variation of kinetic energy of electron as a function of radius of circular path from the wire. Kinetic energy का वैल्यू कितना है? mv square by 2. डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख देंगे. mv square will become 2e lambda e lambda 4 pi epsilon naught. Okay, these are kinetic energy. Then what is the kinetic energy? Constant. So हम एक ग्राफ पिकअप कर लेंगे. The kinetic energy is independent of radius of circular orbit. Very simple, sir. Like what is this, sir? समझ में नहीं आ रहा है. So this is the electric field produced by the long line charge, and the electron is present in the field of this. It expends a force. This force will provide central force, and the electron is moving in circular path. इसका kinetic energy will it depends on radius. How it depends on radius of circular orbit. We are starting from this, from circular motion. Centripetal force is provided by electrostatic attractive force mv square. What is the electric field due to long line charge? Lambda by 2 pi f naught. So यहाँ पे आपको दो चीज आपको यहाँ पे रिमेंबर करना पड़ता है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज. नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट. एनी एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रल फोर्स कैन प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स. अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रहे तो देन यू कैन मैनेज दिस प्रॉब्लम. Okay, this completes your January shift. Once again, what are the basic ideas of electrostatics? Point charges. पहले इसको पढ़ लो. Field and potential due to point charge. Then immediately, next again, V and E due to all the bodies. Just formula याद रहना चाहिए आपको. Then next electric dipole. Next flux equal to q in by epsilon naught. उसके बाद में कंडक्टर्स. जो भी कंडक्टर्स का फॉर्मूलास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग प्लेट, पोटेंशियल्स, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, आर्थिक शेल्स. बस इतना रिवाइज कर लो. दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर JEE Mains. Okay, no, next class I'll come with the next another topic. Till then, okay, bye, take care. Thank you all of you. Thanks for great support.